everyone. A very logical day to all of you and a very logical week to all of you. So, this is the first week, so to say, of March. And let's see what we have in the Monday idea of March 3rd. It is quite a lengthy article, but then, yes, in search of greener pastures, मतलब जहाँ पर हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे बोलते हैं pastures का मतलब होता है meadows. ठीक है, meadows. For those who do not know, MEADOWS. That means simple भाषा में green fields. ठीक है, तो pastures का मतलब होता है जहां पर घास होती है, जहां पे जो cattle है that goes to graze, right? The grazing grounds of the cattle. You can say fields बोल सकते हैं, हमें meadows बोल सकते हैं. तो ये poem में काफी बार यूज होता है ये वर्ड. तो यहाँ पे greener pastures का मतलब जहां पर मतलब you are going to get more, right? You're going to get more benefits plus more opportunities. So now you can relate it to migrants. Why do the people migrate? ठीक है, in search of greener pastures, right? तो अब इस हिसाब से अगर हमें वो टॉपिक समझ में आ गया, अब ये आर्टिकल समझना दिक्कत नहीं आएगा. Let us see. So Meenakshi Ahmed's book Indian Genius: The Meteoric Rise of Indians in America is interesting, timely and important. सबसे बड़ी बात बोल दी उसने, टाइमली, इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग क्यों है, टाइमली कैसे है, और ऐसे तो नहीं कि अभी जब ट्रम्प आए उसके बाद उन्होंने बुक लिख ली, नहीं. तो बुक अभी आई है लेकिन उन्होंने पहले से शुरू किया. वाई इज इट इंटरेस्टिंग? बिकॉज जो बायोग्राफिकल स्केचेस आर हिस्ट्री विदाउट थ्योरी. It is timely because immigration is a hot button subject in the West, and with the arrival of two plane loads of deported Indians from America, some in handcuffs, it is also of relevance to India and ipso facto to every source country. ठीक है, एवरी सोर्स कंट्री मतलब जहां जहां से माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया है या जहां से माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो सोर्स कंट्री कहलाती हैं. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज through the stories of these hugely successful Indians, one can discern nuggets of experience that might help develop a non-zero sum proposition. ठीक है, तो ये अगर स्टोरीज आ जाती हैं इंडियंस की, दूसरे लोगों को समझ में आ जाती हैं, सुन लेते हैं, एक्सपीरियंस उनके समझ लेते हैं, तो फिर कुछ डेवलप होगा. इट इज नॉन जीरो सम प्रोपोजिशंस. जीरो सम और नॉन जीरो सम का हमने आई थिंक से 2 or 3 days बैक हमने देखा है कि इट इज नो जीरो सम गेम. तो जीरो सम गेम का मतलब जहां पे उन्होंने आई थिंक बाइनरीज की बात की थी, गेन एंड लॉस, एक का गेन दूसरे का लॉस होता है, ये जीरो सम गेम होगी. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ जीरो सम गेम नहीं है. टू मेक माइग्रेशन वर्क, दैट मीन्स इट कैन वर्क फॉर ऑल. द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल रिटन बाय एमी पोप, the Director General of the UN International Organization for Migration, is the latest issue of the Foreign Affairs. It might help develop a non-zero sum proposition. So the main idea of this would be that it is a timely, interesting, and an important book written by Meenakshi Ahmed. Now she profiles familiar names under 4 categories. Right, 4 categories hai. So the techies first, they include Kamal Rekhi, founder of the TI, the India US Entrepreneurs Club to foster startups, Vinod Khosla, the founder of Sun Microsystems and in Silicon Valley, and companymen like Shantanu and Naren. Then most venture capitalists है, and companymen, एक techies हो गए, एक companymen हो गया, the healers हो गए third, and the medicine men हो गए 4. That include the polymath doctor of alternative medicine and mindfulness and best-selling author Deepak Chopra, the younger but comparatively gifted डॉक्टर्स, राइटर्स एंड रिसर्चर्स सिद्धार्थ मुखर्जी, अतुल गवंडी. अब आप समझ सकते हैं कि पूरे में उसने वर्ड ये नाम लिया है किसी का, but this is becomes a main idea that yes, at least main idea in the sense we get to know what is given where, right? So that have impacted the public policy. So the scholar, journalist, and CNN anchor Fareed Zakaria, the lawyer Neil Katyal, former governor and President Trump's ambassador to the UN in his first term, Nikki Haley, and Gen Next, a cluster of brilliant millennials who were born in America. So
as in the first paragraph we get to know hugely successful Indians, इनकी कहानी है यहाँ पर, और ये रहे वो Indians. Then, all the people profiled by Ahmed are supremely talented. They would have succeeded in any environment. But the accolades they have received did not fall like manna from heaven. ठीक है, उनको जो जितनी तारीफें, जितनी अचीवमेंट्स उनकी हुई हैं, वो कोई ऐसे बेनिफिट में या ऐसे ही नहीं मिली है. मतलब they have worked hard for it. Falling like man from heaven का मतलब होता है, it is a story कि people like what do you say, the people started getting food, right? ऐसे मन from heaven was जैसे आसमान से फूड पहुंच रहा था इजराइलाइट्स के पास जब वो क्रॉस करके अपनी दुनिया के लिए, अपने देश के लिए जा रहे थे तब. So their success is a result of familial support, education, hard work and an enabling environment, right? So this is what is the reason behind their success. Now, Farid Zakaria talks of his mother as his rock of support in whatever he did, which allowed him to explore options at will. Several point out that education provided them the confidence to circumvent the subtle and not so subtle barriers of caste, class, race, and religious prejudice that they have faced in India and the US. Right? So, this is story, this is how they came up with their achievements. उनके कितने एफर्ट्स हैं, क्योंकि बुक ही है कि उनकी कहानी, उनके एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, तो आसानी से नहीं मिला. इट वाज नॉट सर्व्ड टू देम ऑन अ प्लेटर. They had to work hard to get it. So Kamal Rekhi narrates the insistence of the investors to bring in a white CEO to manage the company he had founded. All confirm that Malcolm Gladwell's 10,000 hour work rule is the sine qua non for their genius. Right? इसका मतलब कितना वर्क रूल जो है, कितना काम तो करना ही पड़ेगा, राइट? उसी की वजह से ये जीनियस बन सकते हैं. इट इज नॉट विदाउट हार्ड वर्क और विदाउट एनी हार्ड वर्क दैट यू कैन अचीव समथिंग. नो, इट इज नेवर दैट वे. ठीक है, और यहाँ से जो आसानी से मिल जाता है ना ऐसा, तो आसानी से चला भी जाता है, लेकिन जो मुश्किलों से मिलता है वो आसानी से नहीं जाता है. दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इन लाइफ आल्सो. So this is what the major reason is why she is writing about them, how she is interviewing them. तो उन्होंने क्या बोला कि ये आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए मेहनत लगी है उनके, चाहे फैमिली का सपोर्ट हो, एजुकेशन सपोर्ट हो, या जिस एनवायरमेंट में वो गए उनका भी सपोर्ट हो, right? And it was their determination from within also that actually helped them achieve all that genius. And everyone acknowledges the debt of gratitude they owe to the enabling culture in the US that allowed them to realize their genius, right? So you can understand this. None of these individuals came to America through the donkey route. ये donkey movie को ये से point out कर रही है, right? कि इस route से नहीं आए. And I'm sure most of you have seen this movie. Notwithstanding that their stories are timely because migration is currently a front and center subject of political debate. This is for numerically understandable reasons. Pope estimates that 5% of America's workforce is undocumented and illegal. 2.5 million people crossed the Mexican-US border 2023, up from 5 lakh in 2022. And Europe received 3,80,000 illegals in 2023, the highest number in over a decade. In consequence, governments have tightened border controls. ठीक है, तो ये डेटा की बात हो रही है, and all this data shows that yes, the migrants, undocumented and illegal, अलग अलग देशों से जा तो रहे ही हैं. ये सिर्फ इंडिया वाले लोगों की बात नहीं है, पर यहाँ तो लाखों लोग हैं undocumented, and therefore in consequence means as a result the governments have tightened the controls. होगा ही, मतलब लॉजिकल है. And the rules related to visas and asylum. Peremptory deportation in military aircraft is, however, still a Trump exclusive, right? तो किस तरीके से उनको भेजा गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, ये ट्रंप का कहना है, बाकी तो डेटा बोलता है.
So the irony, as explained by Pope, is that the current force of anti-immigration sentiment is happening at the same time that immigration is becoming more essential. ठीक है, immigration essential होता जा रहा है, right? Because of the conditions in various countries. And in this situation, in this scenario only, they are talking about the anti-immigration things. So she writes that 30 of the largest economies in the world suffer from labor shortages, and that these unfilled jobs cost an estimated 1.3 trillion in lost GDP in 2023 alone. ठीक है, तो एक हो गया unfilled jobs. She lists several reasons for the imbalance between legal migration and economic need. The paucity of channels for legal access. तो legal migration क्यों नहीं हो रहा है? जॉब्स चाहिए, वहां पे अनफिल्ड जॉब्स हैं, लेबर शॉर्टेजेस हैं कंट्रीज के पास, उनके पास ऐसा कोई काम करने वाले नहीं है। तो अगर दूसरे दूसरी कंट्रीज से लोग आते भी हैं, लीगल तरीके से आते हैं, इट्स ओके फाइन गुड, इलीगल तरीके से क्यों आना पड़ रहा है, right? Why? Because of the lack of channels for legal access, difficulty of accessing these channels, and the spread of disinformation and the criminal networks. So the misalignment between labor market demand and visa issuance, the low priority accorded to skills training to meet this demand. मतलब देखो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ जाती है कि ये इलीगल तरीके से माइग्रेशन होता क्यों है। इसका रीजन, डिमांड तो है लेबर की, ठीक है, इसको अगर हम समझते हैं तो डिमांड तो है लेबर की, लेकिन वो इलीगल तरीके से क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो इलीगल तरीके से क्यों आ रहे हैं उसका रीजनिंग यहाँ पर दिया है, that there is a lack or a paucity of channels, right, डिफिकल्टी है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है, राइट, एंड देन क्रिमिनल नेटवर्क्स है, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रहा है और इसका भी डर लगता है। तो therefore there is this misalignment or a gap. See? Now, the low priority accorded to skills training to meet this demand and the challenge of landing a job through ethical, safe, and legal pathways. Leaders in both source, so that is challenge we have. So these 4-5 words that I've circled, all these are the reasons of why people are going for this or illegally entering the country. So leaders in both source and destination countries, she recommends, should collaborate to move these systemic blockers. ये रहा उसका point कि दोनों countries, चाहे source या destination, कहाँ से आते हैं migrants और कहाँ पे जाते हैं, ठीक है? So they should be working in a synchronized manner, you can say, to remove these blockers. They should collaborate. Now, it is in this effort to remove such blockers that Ahmed's book acquires importance. अब उसने third point कही थी, timely है, important है ना, interesting है, timely है, important है। देखो तो जो first paragraph का first point था, that has been elaborated in the rest of the passage, right? So Indian Americans are the richest ethnic group in America with a per capita income of so much compared to this much for other Asians. This is based on a poll done by Pew in 2018. Further, the American Association of Physicians has estimated that 10% of US doctors are Indian in origin. 10% is a huge thing. These statistics and other data confirm that Indian Americans across multiple domains are a valuable asset to the US and that they have enormous intellectual heft, financial resources, global networks and social influence. मतलब इंडियन अमेरिकन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन की लेबर चले जाते हैं वहां पे, नहीं, वहां का ब्रेन जाता है अमेरिका, इंडिया का ब्रेन जाता है अमेरिका, लेबर तो जाता ही होगा, ब्रेन भी जाता है। So Ahmed's book brings to attention the role that this community can play in cracking the political conundrum of migration. That means because the brain is there, they can actually crack this conundrum. ये जो problem है इसको solve भी कर सकते हैं, इसका solution भी इंडियन से निकालेंगे, ऐसा उनका कहना है। Her narration suggests that the larger swath of the Indian Americans, and not just those profiled, would be willing to leverage the talent and personal experience to help remove the systemic blockers identified by Pope. So the thing is still the same, that Indian Americans, they have such a heavy clout over the others and in the country itself. So it is these people who will be able to
solve this problem of migration. Now, the responses of those interviewed conveys a subliminal awareness that had they confronted anti-immigrant sentiment that has engulfed the Western world, they might have not got the breaks they did. ठीक है, had they have not got, इसका मतलब होता है कि अगर उन्हें उस वक्त पे वो ब्रेक्स नहीं मिलते, नहीं, अगर उस टाइम पे ये एंटी इमिग्रेंट बात चलती तो उन्हें वो ब्रेक्स नहीं मिल सकते थे. तो उस टाइम पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऐसे कुछ बोलना नहीं था, इतना कुछ उनको रोक टोक नहीं थी. And therefore, they were able to study there, they were able to work there, they were able to go there and settle there also, because anti-immigration was not working so strongly at that point of time, right? And therefore, they got the break also. Now, the talent would have prized open the door, but they may not have been allowed in, right? Prized open the door का मतलब होता है ठीक है, टैलेंट की वजह से उन्हें रास्ता तो खुल गया, दिख जाता है, लेकिन उन्हें अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते अगर एंटी इमिग्रेशन लॉज उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रांग होते तो. The search for a better future is an integral human impulse. ठीक है, now the author is coming up with a justification also. So now see they can move towards greener pastures क्योंकि ये definitely ये एक human instinct है कि जहाँ पे उन्हें benefit, जहाँ पे उन्हें comfort ज्यादा मिलेगा उस जगह पे वो जाएंगे ही सही. So that is a human impulse. It cannot be stopped. So this is not to suggest illegal migration should be condoned. Simply that force is a blunt instrument for correcting the present imbalance. ये नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए. तो आप उसमें इलीगल तरीके से जा रहे हैं, हाँ वो रोक दो, राइट? But then you create legal ways of how they can enter the country. Then allow that. तो उसमें वहां पर जो imbalance mention किया गया था ना 2 paragraphs back, right? That is being said here that it is not right to go for illegal migration. It's okay, fine, whatever they are doing. But then bringing those people back in such a condition should not be resorted to. This is the author's point again. Migration can work for all if governments in source and destination countries collaborate with successful immigrants to develop a non-zero sum proposition for those looking for better pastures and those determined to protect their nativist turf. ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाती है अगेन कि दोज लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स यानी जो माइग्रेंट्स है और जो नेटिव अपने ही टर्फ को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में मतलब अलाइनमेंट होनी चाहिए. So it is important, it is interesting and it is a timely released book. ठीक है, मेन आइडियाज देख लेते हैं अब मैं आइडियाज के साथ साथ आई एम टेकिंग द वोकैबुलरी पार्ट आल्सो बिकॉज देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स क्वाइट अ लेंथी आर्टिकल. So interesting, timely, and important becomes your first point and the most important point, right? So ipso facto is by the fact itself. Discern is to see. See in the sense of sight wala see nahi hai. To be able to discern the right from the wrong. तो जुडिशियस होता है इसका मीनिंग. डिसर्निंग का मतलब हम जुडिशियस बोल सकते हैं, प्रूडेंट बोल सकते हैं, ताकि मतलब आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है. तो यहाँ पे डिसर्निंग नगेट्स ऑफ एक्सपीरियंस है. तो नगेट्स तो जैसे न्यूट्री नगेट्स होते हैं ना, सोया नगेट्स होते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस को हम नगेट्स बोलते हैं, राइट? सो यूजुअली आई कॉल दिस लाइक द ग्रामर नगेट्स होते हैं. ये स्मॉल स्मॉल मैसेजेस ऑफ स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश. So nuggets of experience क्या होगा? तो यहाँ पे discerning nuggets of experience. That means you get to understand from very small experience also from these people, and then it might help develop a non-zero sum proposition. Then a polymath doctor of alternative medicine, poly means multiple. तो कई सारी जहाँ पे हमारे पास वो हो जाती हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग मेडिसिन के हिसाब से you have the knowledge of that medicine, so that becomes a polymath doctor.
Accolades is praise. Manna from heaven, I told you, where the food was falling from heaven, right, for the Israelites who were moving towards their country. And this becomes the point again. Education provided them the confidence to circumvent the subtle and not so subtle barriers of caste, class, racial and religious prejudice that they faced in India and the US. So यहाँ पर education को important बताया गया है, बिल्कुल. Sine qua non is something that is a prerequisite. It is something that is indispensable. Right? So this 10,000 hour work rule is a sine qua non for their genius. It's something indispensable, a prerequisite. You cannot do without it. तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. ये मैंने समझा भी दिया था. ये ऐसा होता है, food falling from heaven. ऐसी इमेज मिली मुझे. And manna from heaven is this story only. ठीक है. So this again becomes a point that whatever Trump did, the way he sent the people, deported the people, no, that was his way, his manner of doing things. ठीक है, बाकी ये justify हम नहीं कर पा रहे, ना कर रहे. The author is not justifying this, but what she is giving is the you can say dissecting the matter in a sense that she is explaining us in the book of what did Indians do there and how they reached there and why such a huge big force workforce is undocumented and illegal. तो इसका पूरा डेटा भी दे रहे हैं इधर. पूरा डेटा देने के बाद उन्होंने ये कहा है. ठीक है, न्यूमेरिकली अंडरस्टैंडेबल रीजंस है तो उसने जस्टिफाई किया है. ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो आप उन्हें भेजो, पर इस तरीके से भेजो, ये ट्रम्प का मानना था. राइट, दिस वाज हाउ ही डिड. So, leaders in both source and destination countries, she recommends should collaborate. Here again, this becomes the author's point. Right? And this was the reasoning where she explained. Paucity is the lack or scarcity. Right? Then comes the point again. Statistics and other data confirm that these people across multiple domains are a valuable asset. तो वैल्यूबल तो है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है इनके पास, ब्रेन है, क्लाउड बोल सकते हैं, इनका दमखम है. ठीक है, तो दिमाग तो है इंडियन अमेरिकन का वहां पर. So they are like again global networks and social influence. They are big guns and big shots there in America, right? And this is then the price open the door. A price is to force open. तो उनके टैलेंट की वजह से अमेरिका के दरवाजे तो खुल गए उनके लिए. पर क्या अमेरिका अब उनको अंदर आने दे रही है? बहुतों को नहीं दिया, इसीलिए वो लोग इलीगल तरीके से आ गए. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेस वीजास का मिलना इतना आसान नहीं था. और मल्टीपल रीजन जो इन्होंने इसके पहले वाले पैराग्राफ में दिया. दिस टर्न्स अप टू बी अगेन अनदर पॉइंट. इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेशन को रोकना तो है. यू कांट कंसिडर दिस एज ओके फाइन, बट देन going for a better future or a search for a better future is definitely a human impulse, so you can't stop that. But you can't force, and you can't consider illegal migration also as right? So then what to do? You can't force them away. So then better come up with some of the other solution. Solution may there has to be stories, experiences, learn from those experiences of the people there. And definitely the Indian Americans, again, as said in the previous uh, paragraph here, that they'll definitely come with a solution. वो कर ही लेंगे. Pastures मैंने लिख लिया था शुरू शुरू में, meadows या green fields बोलते हैं उसे. इससे रिलेटेड एक वर्ड और हो जाता है pastoral. ठीक है, pastoral, and then there is another word bucolic for rural. इसे याद आ गया तो आप लिख सकते हो.
ठीक है, ब्यूकॉलिक अलग वर्ड है. ब्यूकॉलिक इज रूरल और कंट्री साइड और कंट्रीफाइड. पैस्चर से रिलेटेड पैस्टोरल पोएम्स या स्टोरीज वो आ जाती पेंटिंग्स. And this comes up as a main idea now. If you want migration to work, look at the success stories. So migration can work for all if governments across countries collaborate with successful immigrants. ठीक है, सक्सेसफुल इमिग्रेंट्स में काफी दिमाग है, जो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे ये इलीगल इमिग्रेशन को हटाने के लिए और ये पूरा मैटर सुलझाने के लिए. This is what the author says, and that's all for today. So we've come up with quite a lengthy article today. So vocabulary और वो दोनों एक साथ ले लिया मैंने. And suggestion to read में अभी I'm not giving you anything today, but you know what all is to be read. The editorial page of the Indian Express वो दोनों तीनों पढ़ना ही है. और आइडियाज वाले पेज पे एक और मेन आइडिया है, वहां पर यूएस से रिलेटेड ही है शायद वो, but then you need to read that. ठीक है, so at least 5 to 6 articles of various genres you read. And this all for today. So stay logical and stay positive, and see you soon.